Bismillahirrahmanirrahim. My name is Syed Naseem. My roll number is Fall 19 BW115 Section 2C. Today my topic is poverty, the biggest obstacle for developing world. Main index in which we talk about definition of poverty, types of poverty, facts and figure, poverty in our country Pakistan, solution and conclusions. Poverty. Poverty is the deprivation of food, shelter, money and clothing when the people cannot satisfy their basic needs. Poverty can be understood simply as a lack of money or more broadly in the term of barriers to everyday human life. Poverty यानी गुर्बत यानी इंसान को जब उसका रहन सहन उसके खाने पीने और ज़रूरियात के कपड़े उसको ना मिले तो उसको हम गुर्बत कहते हैं. Today, poverty is the other economical problem facing most of the nation in the world. There is no unique definition of poverty. Types of poverty. There are two types of poverty: absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty, it is referred to the state of service deprivation of human basic needs, यानी कि इंसान की जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, मकान, रहन सहन, खाना पीना, ये उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, एक इस चीज़ की गुर्बत होती है. दूसरी relative poverty, it is defined contextually as economical inequality in the location or society in which people live. Facts and figure. The World Bank estimated that around 1.29 billion people were in absolute poverty in 2008, about 400 million people in absolute poverty in India, and 173 million people in the China. Sub-Saharan Africa at 47% had highest incidence rate of absolute poverty in 2008. Between 1990 and 2010, about 663 million people moved above the absolute poverty level. Every year, 11 million children living in the poverty die before their fifth birthday. 1.02 billion people go to the bed hungry every night. The World Bank Voice of the Poor. Based on the research, the over people, 20,000 poor people in the 23 countries identities a range of factors which poor people identify as a part of poverty are precious livelihoods, excluded location, physical limitation, gender relationships, lack of security, problems in social relationship, weak community organization, limited capabilities. Poverty line. Poverty threshold or poverty line is the minimum level of income deemed adequate in the given country. In practice, like the definition of poverty, the official or common understanding of the poverty line is significantly higher in the developed countries than in the developing countries. यानी कि पॉवर्टी लाइन जिसके ऊपर इंसान उस लेवल से ऊपर जाए तो उसकी गुर्बत मतलब वो अमीरी की तरफ चला जाता है, और जिस लाइन से वो नीचे जाए तो वो गुर्बत में आ जाती है. यानी वो लाइन जो दोनों को डिफरेंस करती है उसको पॉवर्टी लाइन कहा जाता है. Determining the poverty line is usually done by finding total cost of all essential resources that an average human adult consume in the 1 year. यानी कि एक जो अडल्ट होता है वो एक साल के अंदर कितनी रिसोर्सेज एसेंशियल यानी जो उसकी ज़रूरियात बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो कितनी खर्चा करता है, उसको मेजर किया जाता है. पॉवर्टी लाइन उसको कहा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉवर्टी. Effects of poverty also be cause and creating a poverty cycle operating across multiple. First, number one, health. 1/3 of death are due to poverty related cause. Those living in the poverty suffer from life expectancy. According to World Health Organization, the hunger and malnutrition are the single gravest threats to the world public health. Malnutrition is by far the biggest contributor to the child mortality, present in the half of all cases. Almost 90% of the maternal deaths during childbirth occur in the Asia, Sub-Saharan Africa, compared to less than 1% in the developed world. Hunger, bhook, rises in the living cost, making the poor people less able to afford items. Poor people spend most of the portion of their budget on the food than richer person. यानी जो गरीब लोग हैं उनके पास जो पैसे होते हैं वो उसको खाने पीने में इस्तेमाल हर एक इंसान को ज़रूरत होती है वो करते हैं, क्योंकि गुर्बत के अंदर हंगर भूखापन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. एजुकेशन. Poor children are suffering from hunger, irritability, headache, viral infection, cold. It is safe to state the children who live at or below the poverty level will have far less success educationally than the children will live above the poverty line.
Poor children have a great deal less health care, and this ultimately results in the many absence from the academic year. Additionally, poor children are much more likely to suffer from hunger, fatigue, irritability, headaches, ear infections, flu, colds. These illnesses could be potentially restrict in the child or student focus and concentration. Number 4. Housing. Rents and poverty increase the risk of homelessness. Slum dwellers, who make up the third of the world urban population, live in the poverty no better, if not worse, than rural people who are the traditional focus on the poverty in the developing world. According to reports by United Nations, there are over 100 million street children worldwide. This is the graph about the poverty in the Pakistan. The blue line shows that 2001 year, and red line show 2005. In the Pakistan there is 34.5% is the poverty, and 2005 there is 23.9. Another this graph show Pakistan urban and rural different poverty level graph. Causes and reasons of poverty level in the Pakistan. किस वजह से कौन सी वजहात होती हैं जिनकी वजह से poverty आती है? सबसे पहले ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स बना देती है जो कि गरीब और अमीर के लिए सेम होते हैं, लेकिन गरीब उसको पे नहीं कर सकते, जैसे कि टैक्सेस। अब टैक्सेस जो हैं अमीर लोग हैं वो तो पे कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, जो गरीब आवाम है वो टैक्स पे नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो गरीब आवाम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती। सेकंड, एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन, पढ़ाई। अब जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के लिए फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनको जो गरीब अवाम है उनको स्कॉलरशिप्स नहीं दिया जाता, वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। ये भी एक मेन रीज़न बनती है पॉवर्टी की। अगर वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो वो अच्छी जॉब नहीं कर सकेंगे। ओवर पॉपुलेशन, आवाम का ज़्यादा होना, ये तो एक मतलब मेन रीज़न है, क्योंकि जैसे जैसे आवाम बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा उसको शेल्टर की, खाने पीने की, रहने की, उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई के साथ साथ ये एक मेन रीज़न बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग एजुकेशन हासिल कर लेते हैं फिर उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उनको कहीं जॉब नहीं मिलती है, और जॉब कहीं अच्छी जगह पर जॉब ना मिलना, उनको वो मतलब कि सैलरी नहीं मिलती है, और वो अच्छा रहन सहन, खाना पीना वो अपना नहीं कर सकते। इस वजह से ये भी एक मेन रीज़न है पॉवर्टी की। 5, जुडिशरी सिस्टम, पुअर गवर्नेंस यानी पुअर गरीब, गुर्बत है। 7, करप्शन। नंबर 8, डिवीजन इन द एग्रीकल्चर लैंड। नंबर 9, मटेरियलिज्म। Solution remedies to overcome the poverty in the Pakistan. The full equality between men and women in the public as well as private areas of life. The worldwide minimum wage of $20 per day, and the end of child labor under the age of 16 with the creation of subsidy for the scholarship. The guarantee of shelter, health care, education of food, drinking water as a basic human right that must provided free to all. हुकूमत को चाहिए कि वो इंसानों की हेल्थ केयर, शेल्टर, एजुकेशन, फूड, पीने का पानी, उसको जो है वो फ्री किया जाए, ताकि हर आवाम जो है गुर्बत के बगैर आसानी से जी सके और इससे हम बचा जा सके। Number 3, total redistribution of ideal land to landless farmer and the imposition of 50% cap on the arable land devoted to product for export per country with the creation of worldwide subsidy for organic agriculture. Number 4, an end to private the monopoly ownership over the natural resources with a minimum of 51% local communal ownership in the corporation which controls such resources, as well as termination of intellectual property right on the pharmaceutical drugs. Number 5, cancellation of third world debt with no reciprocal obligation attached, and the payment of compensation to third world countries for historical as well as ecological debt sources. Conclusion: leadership has to guard the central importance here with the proper planning and guard the government policies, but the problems can be solved. All they need to do appoint competent and the well qualified economists to help them tackle that issue. Obviously, their sincerity for the solution cannot be ignored as well. A country economically is backbone of the country in the solution, where it save many problems without medically alone. Leadership is not enough for its solution. People of Pakistan have to guard responsibility with the equal share. People need to cooperate fully with the government and should sincere with their own country, put them all energies for eradication poverty. हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों के लिए एक अलग रूल बनाए, बड़ों के लिए अलग बनाए, क्योंकि अक्सर रूल में टैक्सेस जैसे कर लें वो अमीर पे कर लेते हैं, लेकिन गरीब उसको पे नहीं कर सकते। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों के लिए कम टैक्स की मियाद रखे। और इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि वो इंसान के जो बेसिक राइट्स हैं, उसको रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका वाटर अवेलेबिलिटी, ये उसको आम करें, ताकि
लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस गुर्बत से दूर हो सकें। और थैंक यू वेरी मच।